ध्वनि आयाति? नमो नमः महोदय। हाँ ध्वनि महोदय आयाति। नमो नमः नमस्कारः महोदय। सर्वेभ्यः। नमो नमः नमो महोदय। नमः महोदय। सर्वेभ्यो नमो नमः। नमो नमो नमः। नमः। म्यूट् करोतु सर्वेभ्यः सर्वे। देववाणीं वेदवाणीं मातरं वन्दामहे। सादरं नमस्काराः। उत्तरप्रदेश संस्कृत संस्थानं निरन्तं निखिले अपि उत्तरप्रदेशे संस्कृतस्य ध्वजं सम्नेतुं विविधाः योजनाः सञ्चालयति। तासु अन्यतमा कश्चित् विशिष्टा ऑनलाइन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम निर्माण योजना। तस्या एव अन्तर्गतानां जून मासीय कक्षाणां माध्यमेन आयोज्यते इदं प्रेरणासत्रं। भवतीनां हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं करोमि। अद्य अस्माकं सौभाग्यं वर्तते यत् अस्माकं मध्ये पतञ्जलि योग समिति योगशिक्षकः श्रीमन्तः बनवारीलाल पांडे महोदयाः समुपस्थिताः। महोदयस्य हार्दिकम् अभिनन्दनं वर्तते। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। मातुः सरस्वत्याः कृपाप्रसादं प्राप्तुं सरस्वती वन्दनायै आवायामि चहेत् महोदया। चहेत् जी, सरस्वती वन्दनां सर्वेभ्यः नमो नमः। जय जय हे भगवती सुरभारती तव चरणों प्रणमामः। जय जय हे भगवती सुरभारती तव चरणों प्रणमामः। नाद तत्वमयि जय वागीश्वरी नाद तत्वमयि जय वागीश्वरी शरणं ते गच्छामः। जय जय हे भगवती सुरभारती तव चरणों प्रणमामः। त्वमसि शरण्या त्रिभुवन धन्या सुरमुनिवन्दित चरणा नवरस मधुरा कविता मुखरा स्मित रुचि रुचिरा भरणा। जय जय हे भगवती सुरभारती तव चरणों प्रणमामः। आसीना भव मानस हंसे कुंद तुहिन शशि धवले हर जड़तां कुरु बोधि विकासम सित पंकज तनु प्रेमले। जय जय हे भगवती सुरभारती तव चरणों प्रणमामः। ललित कलामयि ज्ञान विभामयि वीणा पुस्तक धारिणी मतिरासानो तव पद कमले ऐ कुण्ठाविषहारिणी। जय जय हे भगवती सुरभारती तव चरणों प्रणमामः। नाद तत्वमयि जय वागीश्वरी नाद तत्वमयि जय वागीश्वरी शरणं ते गच्छामः। जय जय हे भगवती सुरभारती तव चरणों प्रणमामः। तव चरणों प्रणमामः। तव चरणों प्रणमामः। धन्यवाद। धन्यवादाः। अस्मिन्नेव क्रमे अहं संस्थानगीतिकानिमित्तं सुभाष पाण्डेयः महोदयां निवेदयामि यत् संस्थानगीतिकां प्रस्तौतु। सुभाष जी। सुभाष पाण्डेयः जी अस्ति?
आम महोदय। आम्। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ श्रुतिसारभार विचारहारम् ग्राहय प्रतिपलमलम् निज संस्कृतिं जनमोहिनी संवर्धय कविकुलकलम् ऋषिमुनि महापुरुषादिभूषित संस्कृतं जनय श्रुतं संस्थानमेतज्जयतु भुवि उत्तर प्रदेशजमद्भुतम् वसुधादिकवी कमनीय रचना सारकं गुणमन्दिरम् भवभूति पंचम वेद भारत भाव भावना चंदिरम कवि कालिदास कला कलापम दर्शयत् कवि संश्रितं संस्थानमेतज्जयतु भुवि उत्तर प्रदेशजमद्भुतम् प्राकृत कवित्वविकासकं मृदुपालिकाव्यविभावकं पुरुषार्थपथ संसर्जकं प्रादेशिकं गुरुदर्शकं भाषा प्रसारण धर्मलीना अलौकिकं बुधभावितं भाषा प्रसारण धर्मलीनामलौकिकं बुधभावितं संस्थानमेतज्जयतु भुवि उत्तर प्रदेशजमद्भुतम् योग प्रयोग पुरोहितादि सुराष्ट्र वैभव रक्षकम् निद्रा निमीलित चक्षुषाम् द्रुतमेव नेत्र विमोचकम् साहित्य दर्शन मूल भीति नवीन कवि गुण शोधकं संस्थान में जयतु भुवि उत्तर प्रदेश जमद्भुतम् संस्थान में जयतु भुवि उत्तर प्रदेश जमद्भुतम् उत्तर प्रदेश जमद्भुतम् उत्तर प्रदेश जमद्भुतम्। धन्यवादः महोदय, सुमधुरं गीतं। पुनः एकवारं धन्यवादः। प्रणति भावहि व्याहरामः स्वागतं शुभवन्दनं। समागतानां स्वागतं कर्तुं समन्वयिका सुश्री राधा महोदयाम् अकारयामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये।
मह्यं स्वागतस्य अवसरः प्रदत्तः, तस्मात् सञ्चालिका महोदयायै कोटिशः धन्यवादः। प्रणतिभावे हि व्याहरामं स्वागतं शुभवन्दनम्। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानेन ऑनलाइन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम निर्माण योजनायाः अंगत्वेन सञ्चालितानां सद्यस्य प्रथम द्वितीय स्तर भाषा शिक्षण कक्षया माध्यमेन प्रेरणासत्रं समाचर्यते। कार्यक्रमे अस्मिन् भवतां हार्दं हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च। अद्य अस्माकं परं सौभाग्यं वर्तते यत् योगाचार्याः संस्कृतस्य परम विद्वांसाः श्रीमन्तः बनवारीलाल पाण्डे महाभागाः अस्मान् प्रेरयितुं योगस्य अथः महत्त्वं बोधयितुम् अस्माकं मध्ये ऑनलाइन माध्यमेन समागताः विद्यन्ते। एते महाभागाः कलास्नातकं संस्कृतविषयम् आधृत्य एवं च शिक्षास्नातकं योगविषयेन कृतवन्तः। अयं महाभागः जनपदीय पतञ्जलि योगसमित्यां जनपद प्रभारी रूपेण एवं च जनपदीय आयुष मसीन् समित्यान्तर्गते योग शिक्षक चयन समित्यां योग विशेषज्ञस्य पदं समलङ्कुर्वन्ति। कार्यक्रम अस्मिन् महाभागानां वाक्पुष्पैः हार्दं हार्दं स्वागतं वच्मि। सत्रस्य अस्य प्रेरणादायकानां कार्यकारी अध्यक्षाणां IAS जितेन्द्र कुमार, अपर मुख्य सचिवानां अस्मत् संरक्षकानां मान्य निदेशकानां विनय श्रीवास्तव वर्याणां प्रधान सहायकाः येषां नेतृत्वे इयं योजना सञ्चाल्यमाना वर्तते श्रीमन्तः भगवान् तिम्मि चौहान वर्याणां च हार्दं हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च करोमि। योजनागणे प्रशिक्षण प्रमुखानां प्रशिक्षण समन्वयकानां च हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च करोमि। सत्र संचालकेषु मीना कुमारी, पूजा वाजपेयी, डॉक्टर स्तुति गोस्वामी, ओम दत्त द्विवेदी, विष्णु कुमार पाठकश्च एतेषां प्रशिक्षक बान्धवानाम् अपि स्वागतं करोमि। कार्यक्रमे अस्मिन् मंगलाचरणं, संस्थान गीतिका, अन्येषु कार्यक्रमेषु भागं गृहीतॄणाम् उपस्थितानां च शिक्षार्थिनाम् अन्येषां सामाजिकानां च अभिवन्दनं। पुनः तावत् भवतां भवतीनां च सादरं स्वागतम् अभिवन्दनं। धन्यवादः। धन्यवादः भगिनी। तो अस्मिन् क्रमे केचन कार्यक्रमाः सन्ति, तो वयम् एकवारं कार्यक्रमान् अपि पश्यामः। तो सर्वप्रथमम् अहम् अनुभवकथनार्थं प्रशिक्षु गीता वशिष्ठ महोदयां निवेदयामि यत् स्वकीयम् अनुभवं वदतु। गीताजी। नमो नमः सर्वेभ्यो। दाराजल क्रीडानादग्भिः शरीरं शान्तकरणं व्यायामः कथ्यते। व्यायामः नित्यं करणीयः भवति। अस्य नित्यानुष्ठानेन गात्राणि पुष्टानि भवन्ति, शरीरे द्रुतं रक्तसञ्चारः भवति, प्रसवेदै शरीरात् आम्लं विषं च निर्गच्छति। अनेन पावनकर्म अपि सम्यक् भवति। व्यवहितः व्यायामः यथैव अस्वास्थ्यप्रदः भवति, तथैव अव्यवहितः व्यायामः स्वास्थ्यकरः भवति। स्वस्थे शरीरे एव स्वस्थं मस्तिष्कं भवति। स्वस्थः जनः सुयोग्यः नागरिकः भवति। देशसेवां स्वस्थे एव नागरिकाः कुर्वन्ति। न चास्ति सदृशं तेन किञ्चित् स्थौल्य अपकर्षणम् आरोग्यं चापि परमं व्यायामः उपजायते। शरीरमाद्यं खलु धर्मसाधनम् इति कथ्यते अपि। व्यायामात् लभते स्वास्थ्यं दीर्घायुष्यं बलं सुखम् आरोग्यं परं भाग्यं स्वास्थ्यं सर्वार्थ साधकम्। धन्यवादः। धन्यवादः। एकं निवेदनमस्ति, भवन्तः यत् प्रस्तुतिं ददन्ति तो वीडियो अवश्यमेव उद्घाटयतु। वीडियो उद्घाट्य एव प्रस्तुतिं ददातु। अस्तु। तो इदानीम् अहम् गीतार्थं
अजंता प्रसाद महोदयं निवेदयामि यत् गीतं प्रस्तौतु। नमो नमः। अजंता नमो नमः। पठत संस्कृतम्। पठत संस्कृतं वदत संस्कृतं लसतु संस्कृतं चिरं गृहे गृहे च पुनरपि। पठत संस्कृतं वदत संस्कृतं लसतु संस्कृतं चिरं गृहे गृहे च पुनरपि। ज्ञानवैभवं वेदवाङ्मयं लसति यत्र भवभयापहारि मुनिभिरार्जितं। कीर्तिरार्जिता यस्य प्रणयनात् व्यासभासकालिदासबाणमुख्यकविभिः। पठत संस्कृतं वदत संस्कृतं लसतु संस्कृतं चिरं गृहे गृहे च पुनरपि। स्थानमूर्जितं यस्य मन्वते वाग्विचिन्तका हि वाक्षु यस्य वीक्ष्य मधुरतां। यद्विना जना नैव जानते भारतीय संस्कृतिं सनातनाभिधां वराम्। पठत संस्कृतं वदत संस्कृतं लसतु संस्कृतं चिरं गृहे गृहे च पुनरपि। जयतु संस्कृतं संस्कृतिस्तथा संस्कृतस्य संस्कृतेश्च प्रणयना च मनुकुलं। जयतु संस्कृतं जयतु मनुकुलं जयतु जयतु संस्कृतं जयतु जयतु मनुकुलं। जयतु जयतु संस्कृतं जयतु जयतु मनुकुलं। पठत संस्कृतं वदत संस्कृतं लसत संस्कृतं चिरं गृहे गृहे च पुनरपि। गृहे गृहे च पुनरपि। हरि ओम्। धन्यवादः महोदयः, बहुशः धन्यवादः। अग्रे अहं सविवरणं योगासनप्रस्तुतिनिमित्तं नित्याशाः महोदयां निवेदयामि यत् स्वकीयं योगासनप्रस्तुतिं ददातु। सर्वेभ्यो नमो नमः। मम नाम पथ्याशा अस्ति। अहं गुजरातराज्यस्य अहमदाबाद नगरे निवसामि। अद्य अहम् अस्मिन् प्रेरणासत्रे गोमुखासनं प्रदर्शयितुम् इच्छामि। सर्वप्रथम अहं दण्डासने उपविशामि। हठयोग प्रदीपिका ग्रन्थस्य प्रथमे अध्याये गोमुखासनस्य व्याख्या वर्णिता अस्ति। तदनुसारम् अहम् एतत् आसनं प्रदर्शयामि। सर्वप्रथम अहं मम दक्षिणजानु वामजानोः उपरि संस्थाप्य वामजानु दक्षिणजानोः अधः संस्थापयामि। पादाङ्गुल्यः यथाशक्ति समीपे आनयामि। श्वासं पूरयित्वा तथा उत्तानतया स्थित्वा अहं मम हस्तौ पृष्ठभागे आनयामि। अङ्गुलीनां मेलनं करोमि। तत्पश्चात् मुखम् उपरि कृत्वा तथा मम दृष्टिम् अन्तरिक्षे स्थापयामि। पञ्चवारं श्वासं पूरयामि, निष्कासयामि। अधुना अहं श्वासं पुनः पूरयामि, निष्कासयामि।
पूरयामि निष्कासयामि पूरयामि निष्कासयामि पूरयामि निष्कासयामि पूरयामि निष्कासयामि। एतेन प्रकारेण 5 वारं करणीयम्। तत्पश्चात् अहम् एतस्मात् आसनात् मूलस्थितिं प्रति आगच्छामि। नेत्रे निमील्य अहं 5 श्वासपर्यन्तं विश्रामं करोमि। अस्तु, एतस्य आसनस्य लाभः कः? अधुना अहम् इति वदामि। प्रथमं कटिसन्धि विकारनाशनम्। द्वितीयम् उरुवलय शक्ति वृद्धिकरम्। तृतीयं पृष्ठवदनम्। चतुर्थं पीनस्कन्धकरणम्। पंचमं नाभिचक्र शक्ति विकासकम्। नाभिचक्र शक्ति वर्धनम् अपि। पंचमं दुष्टवातनाशनम्। इतोपि मैं इन सभी लाभों को आप सभी को हिंदी में अवगत कराना चाहती हूँ। गोमुखासन, ये आसन सबसे प्राचीन आसनों में से एक है। गोमुखासन से हमारे जो हिप जॉइंट है, जो कटी संधि है, कटी संधि के जो भी डिसऑर्डर्स होते हैं, मतलब उनमें जो भी जकड़न आती है, जिन लोगों की नौकरी वगैरह लंबे समय तक बैठे रहने की होती है, उन सभी को हिप जॉइंट में जो भी प्रॉब्लम आती है, नित्य गोमुखासन का अभ्यास करने से उन तकलीफों से निवारण पाया जा सकता है। रीढ़ की हड्डी का लचीलापन गोमुखासन से आने में बहुत सहायता मिलती है। हमारी रीढ़ की हड्डी की 3 स्थितियां हैं। 3 स्थिति से वो बिगड़ती है, ऐसा हम कह सकते हैं। उसमें सबसे पहले है काइफोसिस, दूसरा है स्कोलियोसिस और तीसरा है लॉर्डोसिस। ये 3 स्थिति है जिससे हमारी स्पाइन का मतलब कि हमारे जो रीढ़ की हड्डी है उसका शेप बिगड़ता है। नित्य गोमुखासन के अभ्यास से इसमें से जो 2 स्थिति है, काइफोसिस और लॉर्डोसिस, इससे निजात पाई जा सकती है। हमारे स्पाइन की आयु नित्य गोमुखासन के अभ्यास से बढ़ती है। रीढ़ की हड्डी का जो लचीलापन आता है, उससे हमारे मस्तिष्क के जो सेल्स है वो एकदम सशक्त बनते हैं। इसके उपरांत गोमुखासन के और भी बहुत सारे लाभ है, जैसे हमारे यहाँ पे जो डेल्टॉइड मसल्स है और यहाँ पे जो ट्राइसेप्स मसल्स है, ये डेल्टॉइड और ट्राइसेप्स, ये दोनों मसल्स का लचीलापन इससे बढ़ता है, ताकि हमारे कंधों में मजबूताई आती है। जिनके कंधे बहुत ही निर्बल होते हैं, तो नित्य गोमुखासन के अभ्यास से कंधों की मांसपेशियां खुलती है। वो जो हमारा शोल्डर जॉइंट कहलाया जाता है, शोल्डर जॉइंट में फ्लेक्सिबिलिटी आती है गोमुखासन के नित्य अभ्यास से। इसके उपरांत साइटिका करके एक दर्द की स्थिति होती है, जो हमारे कटी संधान यानी कि हिप से नीचे पूरे पैर तक जाती है, जो शरीर की सबसे बड़ी वेन कहलाती है। उसमें खून सही तरीके से नहीं पहुंचने से साइटिका नाम का दर्द शुरू होता है साइटिक वेन में। नित्य गोमुखासन के अभ्यास से साइटिक वेन में हम पूरा खून का बहाव ऑक्सीजन के साथ ले जा सकते हैं, ताकि इस स्थिति से भी हम निजात पा सकते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, हम सभी ने सुना होगा, उच्च रक्तचाप करके एक
डिसऑर्डर है, स्थिति है, वो हाई ब्लड प्रेशर है, उसमें भी हम नित्य गोमुखासन के अभ्यास से कंट्रोल कर सकते हैं, उसको उस स्थिति को काबू में ला सकते हैं। और इस आसन के अभ्यास से एक रिलैक्सेशन की स्थिति बनती है, जिससे हमारे ब्रेन में आई हुई जो नर्वस सिस्टम है वो नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होती है, और पैरासिम्पैथेटिक नर्व जो हमारे ब्रेन में होती है उसकी कार्यक्षमता इससे बढ़ती है, जिससे जो साधक है वो हमेशा साधना की ओर जाता है, उसका मन शांत और स्थिर रहता है और इंद्रियों की चंचलता कम रहती है, ये पैरासिम्पैथेटिक नर्व एक्टिव होने से। इस तरह से गोमुखासन के बहुत सारे लाभ है। तो मैं आप सभी से करबद्ध प्रार्थना करूंगी कि नित्य योगाभ्यास को अपने जीवन में स्थान दे और गोमुखासन का अभ्यास करके उसके लाभ पाए। सर्वेभ्यो नमो नमः। अस्तु, धन्यवादः भगिनी, बहु सुन्दरं वयं प्रस्तुतिं दृष्टवन्तः। तो इदानीम् अग्रे वयं चलामः, पुनः वयम् अनुभवं शृणुमः। तो इदानीम् अनुभवकथनार्थम् अहम् अरुण तिवारी महोदयं निवेदयामि, यत् स्वकीयम् अनुभवं प्रस्तौतु। सर्वेभ्यः नमो नमः। सर्वेभ्यः नमो नमः। मम नाम अरुणः, अहं सेवानिवृत्त रेलवे अभियन्ता अस्मि। अहं प्रयागराजम् उपवसामि। अद्य अहम् अन्तर्राष्ट्रीययोगदिवसस्य विषये किञ्चित् वक्तुम् इच्छामि। योगे विद्या भारतवर्षस्य अमूल्यनिधिः। इदानीं प्रश्नः अस्ति, योगः कः, अस्य उत्पत्तिः कथम् अभवत्, वयं किमर्थं योगः कुर्मः। योग शब्दस्य उत्पत्तिः युज् धातुः अभवत्। योगः त्रिधा भवति। प्रथमः युज् समाधोः, अतः तस्य नाम समाधिः। द्वितीयः युजिर्योगे, अतः तस्य नाम संयोगः। तृतीयः युज् संयमने, तस्य नाम संयमन अर्थात मनसः संयमः। अनेन योग समाधिना ऋषियोः मंत्रान् द्रष्टुं समर्थाः। श्रीमद्भगवद्गीतायां योगस्य द्विविधित्व वर्णितः श्रीकृष्णेन, यथा ज्ञानयोगः कर्मयोगश्च। योगदर्शानुसारेण योगस्य 8 अंगानि सन्ति। तदुक्तं योगदर्शने यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान, समाधनोष्ठांगानि इति। योग विद्या संबद्ध ज्ञानम भारतीय शास्त्रेषु, वेदेषु, पुराणेषु, गीतायां च प्राप्यते। योगः अतीव विस्तृतः विषयः अस्ति। समयस्य अभावात् वयं पुनः विषयस्य चर्चा करिष्यामः। प्रतिवर्ष जून मासस्य 21तमे दिनाङ्के योग दिवस भवति। अस्मिन् दिने प्रधानमंत्री महोदयः अपि सामान्यजनानां मध्ये गत्वा योगासनं करोति। दिसंबर मासस्य 11 दिनाङ्के 2014तमे वर्षे संयुक्त राष्ट्रस्य मध्ये प्रत्येक अस्मिन् जून मासस्य 21तमे दिनाङ्के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस्य आयोजितुं प्रस्तावः अनुमोदितः। योगः अपि अस्माकं देशस्य संस्कृत्याः एकं महत्वपूर्णम् अवयवम् अस्ति। अधुना अस्माकं प्रधानमंत्री महोदयस्य कारणेन योगस्य लाभः संपूर्ण विश्वं प्राप्नोति इति अस्माकं कृते
गौरवस्य विषयः अस्ति। अस्तु, इदानीम् अहं मम वाणीं विश्रामं ददामि। जयतु योगः, जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्। नमो नमः। धन्यवादः। धन्यवादः महोदय। अस्मिन् क्रमे वयं गीतमेकं शृणुमः संस्कृतगीतनिमित्तम्। अहं पूनम महोदयां निवेदयामि संस्कृतगीतं प्रस्तुतवती। पूनम जी। पूनम जी नास्ति? अस्तु, विपिन पाण्डेयः महोदयं निवेदयामि। विपिन पाण्डे महोदय संस्कृतगीतं प्रस्तौतु। आं महोदय। सर्वेभ्यो नमो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। मम नाम विपिन पाण्डेयः अस्ति। अहं भवतः ध्वनि सम्यक्तया न आयाति। अधुना आयाति महोदय? आमाम् आयाति। नयतव बालमिमं तव बालमिमं यशोदे नय तव बालमिमं नय तव बालमिमं तव बालमिमं चेष्टितमाचे सोढुं शक्यं चेष्टितमाचे सोढुं शक्यं नय तव बालमिमं यशोदे नय तव बालमिमं विशति समन्दं विजनं गेहं विशति समन्दं विजनं गेहं चलति बिडाल समं कृष्णः चलति दधिनवनीतं घृतमवशेषम् न यशोदे नय तव बालमिमं जलमाने तुम कूपगतानां जलमाने तुम कूपगतानां चरणं
महोदयस्य ध्वनिः नागच्छति अग्रे चलामः। वारयति हरि ओम्। ध्वनि न आयाति, मध्ये मध्ये स्थगनं भवति। अस्तु, तथापि चिन्ता मास्तु। सुन्दरं गीतं, नयतव बालमिमं यशोदे, नयतव बालमिमं। नीचे वाला तो अग्रे हम वक्तुम् वयं इच्छामि। चलामः। बनवारीलाल पाण्डेयो वदतु। वक्तुम् इच्छति। जी जी महोदय, भवतः एव क्रमः इदानीं। श्रूयताम्। आम्, तो इदानीम् अधुना सः समयः आगतः यस्य वयं प्रतीक्षाम् औत्सुक्येन कुर्वन्तः स्मः। अहम् इदानीं विलम्बं न स्वीकरोमि। तो अस्मिन् मध्ये पतञ्जलि योग समिति योगशिक्षकः श्रीमन्तः बनवारीलाल पाण्डे महोदयः सन्ति। महोदयं निवेदयामि यत् स्वकीय वचनेन अस्माकम् अभिसिञ्चनम्। हाँ, अथ योगानुशासनम्। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन यो अपाकरोत् तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। यो महर्षिः योगेन चित्तस्य मलं निष्कासयितुं योगदर्शन इत्याख्ये ग्रन्थाः लिखितवान्। वाचः शुद्ध्यर्थं व्याकरणसूत्राणि रचितानि। शरीरस्थं मलं क्षालयितुं वैद्यकशास्त्रं विरचितं। तं मुनीनां प्रवरं पतञ्जलिं बद्धाञ्जलिः नमामि। पातञ्जलयोगदर्शनस्य प्रथमं सूत्रम् अथ योगानुशासनम्। अत्र अथ शब्दः अधिकारार्थे प्रयुक्तः। यद् विषये यस्य अधिकारः पर्याप्तं ज्ञानं भवति स एव तद् व्याख्यायितुं समर्थः। अतः पतञ्जलिः सूत्रं रचयित्वा योगदर्शनं व्याख्यापयति। योगशब्दस्य अर्थम् अत्र महर्षि व्यासेन समाधिः कृतम्। अयं शब्दः त्रयाणां शब्दानाम् एकः शब्दः। सम, आ तथा धी। सम अर्थात सम्यक, आ अर्थात समन्ता पर्याप्तम, धी धारणे च अवगंतव्यम। यत् तत्त्वं श्रेष्ठं पर्याप्तं च तदस्माभिः धारणीयम्। समाधि शब्दस्य बहुसमः शब्दः समाधानम्। अत्रापि त्रयः शब्दाः सम, आ, आधानम्। एतद्विषये उदाहरणं गुरुणा द्वौ शिष्यौ 1 लीटर् मितं दुग्धम् आनेतुं पृथक् पृथक् प्रेषितौ। द्वाभ्यां दुग्धम् आनीतं। गुरुणा एकं शिष्यं पृष्टं किं दुग्धं शुद्धं? शिष्येण उक्तम् आम गुरुवर। किं पर्याप्तमात्रायामपि? तत्र न विश्वस्तोऽहम्। अत्र नास्ति समाधानम्। गुरुणा पृष्टः द्वितीयः शिष्यः अवदत् दुग्धं शुद्धं पर्याप्तमात्रायामपि। अत्र समाधानम्। अतः एतत् कथयितुं शक्यते यत् योगः सर्वासां समस्यानां समाधानं। यदि वयं योगम् आचरेम तर्हि अस्माकं जीवनं सुन्दरं भवितुं शक्यते। मनः शरीरं च स्वस्थं भवति। एकं श्लोकम् अत्र द्रष्टव्यम्। न तस्य रोगो न जरा न मृत्युः प्राप्तस्य योगाग्निमयं
शरीरम योगाग्निना तप्तं शरीरम रोग मुक्तम जरा कष्ट रहितम मृत्यु भय रहितम च भवति। मृत्योर्भय समाप्ति मृत्योपरि विजयम। महर्षिणा योग से अष्टौ अंगानि कथितानि यम नियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयः यथा अस्माकं शरीरस्य सर्वाणि अंगानि मिलित्वा शरीरं न तु कतिपयानि अंगानि अथवा एकम अंगम शरीरं कथ्यते। एवमेव अष्टानाम अंगानां समाहारः योगः। अतः केचित् जनाः कतिचित् आसनानाम् अभ्यासं कुर्वन्ति तथा आत्मानं योगी कथयन्ति। नैतदुचितम्। तत्र प्रथमः सोपानः यम, द्वितीयः नियम। आसन शब्द से महर्षि प्रयोजनम उपवेशनम के उपवेशन विधि। पद्मासन, सिद्धासन, वज्रासन आदि आसन विधया। सुखासनम अपि आसनम उत्तम। यदा आसनम सिद्धम भवति अर्थात उपवेशनम कष्टरहितम भवति तदा चतुर्थम अंगम प्राणायामः अभ्यस्यते। प्राणायामः श्वास प्रश्वासयोर्गति विच्छेदः। यतः उक्तम चले वाक्ये चलम चित्तम और निश्चले निश्चलम भवेत्। योग दर्शने द्वितीयं सूत्रम योगश्चित्तवृत्ति निरोधः। चंचले चित्ते चित्तवृत्ति निरोधः कथम? यदा श्वास प्रश्वास विरामः तदा इंद्रियाणां प्रविषया संप्रयोगः भवति। तदंगः प्रत्याहारः कथ्यते। इंद्रियाणाम् अंतर्मुखी स्थित्यां चित्तः अपि स्थिरो भवति। तस्य एकस्मिन् चक्रे स्थापनं धारणा इति कथ्यते। मणिपुर चक्रे, हृदय चक्रे, आज्ञा चक्रे वा चित्त बंधनम धारणा। धारणायाः निरंतरता पराकाष्ठा वा ध्यानम। ध्यानास्थितौ यदा स्वरूप शून्यता इव अनुभूयते अर्थमात्र निर्भास स्थिति जायते तदवस्था समाधि। इयमेव योग यात्रा। समाधौ वयं सर्वाणि दायित्वानि सम्यक्तया निर्वहणे समर्थाः भवामः। भगवता कृष्णेन अर्जुनं प्रति कथितं योगस्थः कुरु कर्माणि अर्थात समाधिस्थ होकर के कर्म करो। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा विदाउट एनी अटैचमेंट यू डू योर ऑल। धनंजय सिद्ध सिद्धो समो भूत्वा नैतत् मम अधिकारः एतस्मिन् सिद्ध सिद्धो न मे अधिकारः। अत्र भगवता फलं दीयते। तो सिद्ध सिद्धो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। अच्छा, श्वासावरोधने गुरो सानिध्यम आवश्यकम। अतः विभिन्नाः श्वसन क्रियाः प्राणायामान्तर्गते प्रचलितानि। विभिन्नाः शारीरिकाः व्यायामाः आसन नाम्ना क्रियन्ते। प्रधान प्राणायाम भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम अग्निसार क्रिया, उज्जाई प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम तथा ओंकार उच्चारण, प्रणव उच्चारण। और
अष्टमः प्राणायामः प्रणवध्यानं केवलं मन्दं मन्दं श्वासोच्छ्वासं कर्तुं वयम् एवं उदीयमानसूर्यस्य ध्यानं करणीयम्। मंदम मंदम श्वासम और उदीयमान से सूर्य से ध्यानम अहम उदीयमान सूर्य मंडले समर्पितो अस्मि। हिंदी भाषायाम एकम दोहा इति कथ्यते, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। इदम ध्यानम परमात्मना यह सृष्टि विरचिता सा नश्वर जड़ पदार्थ आत्मा तथा परमात्मा द्वे चेतने मानसे कथितम ईश्वर अंश जीव अविनाशी आत्मना परमात्मना अंशा अतः सर्वे गुणा ये गुणा परमात्मनि ते गुणा आत्मनि अपि। प्रथमं गुणं चेतन आत्मा चेतन, द्वितीयं गुणं अमलं निर्मलं, तृतीयं गुणं सहज सुख राशि नैसर्गिक सुख से संग्रह समः। अस्माभिः योगं सदा करणीयम्। अधुना आधुनिक चिकित्सा विज्ञान असाध्य रोगान् अपनेतुम् असमर्थः। योगेन वयम् असाध्यान् अपि रोगान् दूरीकर्तुं समर्थः। विशेषतः प्राणायामः समस्तानामेव असाध्यरोगाणाम् उपचारम्। यदि वयं दीर्घकाल पर्यन्तम् अनुलोम विलोम कपालभाति प्राणायामम् अभ्यसामः तदा असाध्य रोगाणामपि निदानम् उपचारं कुर्मः। नमो नमः। प्रणामः। धन्यवादः महोदय। योगः कर्मसु कौशलम्। इदानीं केचन इतोपि कार्यक्रमाः सन्ति, तो इदानीम् अवसरः दीयते। तो पुनः अहम् अनुभवकथनार्थम् अरुण तिवारी अस्ति, अरुण तिवारी महोदय अस्ति। अभवत्? अरुण तिवारी महोदयस्य अभवत्? अस्तु। तो इदानीं लीला अम्बारखाने महोदयां निवेदयामि। लीला अम्बारखाने स्वकीयम् अनुभवं वदति। नमस्कारम्। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। मम नाम लीला अम्बारखाने। अहं मध्यप्रदेशे सुजाल्पुरनगरे उपवसामि। गत 21 दिनाङ्के वयं सर्वे योगदिवसस्य च आयोजनं कृतवन्तः। अहम् एका आयुर्वेदचिकित्सा अस्मि, अतः योगविषये तथा संस्कृतकक्षाया विषये किञ्चित् अनुभवं वक्तुम् इच्छामि। कोरोनाकाले मम एकः प्राणवायुकोशः पूर्णतया क्षतिग्रस्तः अभवत्। अतः अधुना अहं चिकित्साकार्यं कर्तुम् असमर्था अस्मि। अहम् उत्तरप्रदेशसंस्कृतसंस्थानस्य तथा शिक्षकः च अनुभवी अस्मि। यत् संस्थानम् अस्माकं कृते निःशुल्कसंस्कृतसम्भाषणकक्षां चालयति। अत्र अहं बहुवारं कक्षां पठितवती। एषः प्रशंसनीयः विषयः अस्ति यत् अत्र सर्वेषां कृते समानपाठ्यक्रमः अस्ति।
उच्च-नीच-भावना नास्ति। वयम् अत्र अध्ययनेन गौरवम् अनुभवामः। श्रेष्ठतम चिकित्सक मम चिकित्सां करोति, तथा यत्र कक्षायां संस्कृतस्य उच्चारण संस्कृतभाषा सम्भाषणेन मम श्वासस्य प्राणायामः अपि भवति, यस्य कारणेन मम प्राणवायुकोशस्य अपि चिकित्सा अभवत्। संस्कृत पठित्वा अहं बहु सम्यक् अनुभवामि। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलि प्राञ्जलिशनातकोऽस्मि। योगः भारतस्य अमूल्यनिधिः अस्ति। योगेन विना कोऽपि स्वस्थः भवितुं न शक्नोमि। मम पुत्रवधू अपि योगशिक्षिका अस्ति। तथा तया सह अहं बेङ्गलूरुनगरे श्री रविशङ्करस्य आश्रमं गतवती। तत्र शिबिरे सुदर्शनक्रिया नाम्ना योगासनम् अपि कृतवती। एषः योगः लयबद्धः समयबद्धः श्वासतन्त्रस्य योगः अस्ति। अस्माभिः नूनं योगः अवश्यमेव करणीयः। शरीरसौष्ठवं, कान्ति, स्फूर्ति, आरोग्यम् इत्यादि योगस्य लाभाः सन्ति। योगमाध्यमेन प्राणवायोः रक्षणं भवति, येन अस्माकं जीवनम् अपि रक्षितं भवति। जयतु योगः, जयतु संस्कृतं, जयतु भारतं, जयतु विश्वम्। नमो नमः। धन्यवादः महोदयायाः कृते। अस्मिन्नेव क्रमे अहं संस्कृतगीतनिमित्तं पूनम महोदया अस्ति, आगतवती अस्ति। पूनम पाल महोदया। आम्, तो अनुपमा मिश्र महोदयां निवेदयामि यत् संस्कृतगीतं प्रस्तौतु। अनुपमा मिश्र। जी महोदय, धन्यवादः। देववाणीं वेदवाणीं मातरं वन्दामहे, चिरनवीनां चिरपुराणीं सादरं वन्दामहे। देववाणीं वेदवाणीं मातरं वन्दामहे। दिव्यसंस्कृतिरक्षणार्थं तत्परा भवने भ्रमन्तः, लोकजागरणाय सिद्धसङ्घटन्मन्त्रं जपन्तः। कृतिपरा लक्ष्यैकनिष्ठा भारतं सेवामहे। देववाणीं वेदवाणीं मातरं वन्दामहे। भेदभावनिवारणार्थं बन्धुतामनुभावयेम, कर्मणा मनसा च वचसा मातृवन्दनमाचरेम। कीर्तिधनपदकामनारे विरहितामोदामहे। देववाणीं वेदवाणीं मातरं वन्दामहे। चिरनवीनां चिरपुराणीं सादरं वन्दामहे। देववाणीं वेदवाणीं मातरं वन्दामहे। संस्कृतिर्विमुखं समाजं जीवनेन शिक्षयेम, मनुकुलादर्शं समन्तात् पालयित्वा दर्शयेम। जीवनं संस्कृतहितार्थं स्वार्पितं मन्यामहे। देववाणीं वेदवाणीं मातरं वन्दामहे। चिरनवीनां चिर
देववाणीं वेदवाणीं मातरं वन्दामहे। वयं साध्यं लक्ष्यमेतत् संस्कृतेन साधयन्तः त्यागधैर्यसमर्पणेन नवलमितिहासं लिखन्तः जन्मभूमिसमर्चनार्थं सर्वदा वन्दामहे। देववाणीं वेदवाणीं मातरं वन्दामहे। चिरनवीनां चिरपुराणीं सादरं वन्दामहे। देववाणीं वेदवाणीं मातरं वन्दामहे। भारताः सोदरः सर्वे भावये हृदि विदधताः। वयं संस्कृतसाधकाः इह सज्जिता नैजं विहाय परमवैभवसाधनार्थं वरमहो याचामहे। देववाणीं वेदवाणीं मातरं वन्दामहे। चिरनवीनां चिरपुराणीं सादरं वन्दामहे। देववाणीं वेदवाणीं मातरं वन्दामहे। दिव्यसंस्कृतिरक्षणार्थं तत्परा भवने भ्रमन्तः लोकजागरणाय सिद्धसङ्घटन्मन्त्रं जपन्तः कृतिपरा लक्ष्यैकनिष्ठ भारतं सेवामहे। मातरं वन्दामहे। देववाणीं वेदवाणीं मातरं वन्दामहे। चिरनवीनां चिरपुराणीं सादरं वन्दामहे। देववाणीं वेदवाणीं मातरं वन्दामहे। सादरं वन्दामहे। धन्यवादः। धन्यवादः। सुमधुरं गीतवत्ते भगिन्ये पुनः एकवारं धन्यवादः। धन्या भारतभूरेशा धन्या अस्माकं परम्परा। समागतेभ्यः धन्यताम् आविष्कर्तुम् ऑनलाइन सम्भाषणयोजनायाः अस्य प्रशिक्षिकां श्रीमती मीना महोदयां सस्नेहं सादरं प्रार्थयामि। धन्यवाद ज्ञापनं करोमि। मीना इति। धन्यवादाः भगिनी। श्रूयते वा? आम्। वागार्थाविव सम्प्रोक्तौ वागार्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। सर्वेभ्यो नमः। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानेन ऑनलाइन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम निर्माण योजनायाः अंगत्वेन संचालितानां प्रथम द्वितीय स्तर संस्कृत भाषा शिक्षण कक्षाणां माध्यमेन बौद्धिक सत्रस्य अंतर्गते योगं प्रत्याधारितं कार्यक्रमः समाचर्यते। तस्य अंतर्गत्वेन आयोजिते अस्मिन् कार्यक्रमे भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च। अद्य अस्माकं सौभाग्यं यत् संस्कृतस्य तथा योगस्य च परम विद्वांसः सभायाम् उपस्थिताः इति आनन्दस्य विषयः। एते महानुभावाः पतंजलि योग समितेः जनपद प्रभारी तथा जनपदस्य आयुष मिशन समित्या अंतर्गत
योग शिक्षक चयन समित्यां योग विशेषज्ञ इति पदेन विभूषिताः सन्ति। योग प्रचार निरतेभ्यः विद्वत्तलजेभ्यः अस्य कार्यक्रमस्य मुख्य वक्तृभ्यः श्रीमद्भ्यः बनवारी लाल पांडेभ्यः मधुकरेभ्यः हार्दं धन्यवादं विज्ञापयामि। सत्रस्य प्रेरणादायकेभ्यः अस्मत् संरक्षकेभ्यः भाषा विभाग उत्तर प्रदेश शासनस्य प्रमुख सचिवः संस्थानस्य प्रभारी अध्यक्षः जितेन्द्र कुमार महोदयानां हार्दं धन्यवादं विज्ञापयामि। मान्य निदेशकेभ्यः विनय श्रीवास्तव महोदयेभ्यः हार्दं धन्यवादं विनिवेदयामि। संस्थानेन संचालितायाः समग्र संभाषण योजना पर्यवेक्षकेभ्यः भगवान सिंह चौहान वर्येभ्यः हार्दं धन्यवादं विज्ञापयामि। योजना समन्वयने कक्षा प्रबंधने प्रशिक्षक प्रबंधने च निरन्तरं निरतेभ्यः प्रशिक्षण समन्वयकेभ्यः श्री धीरज मैठाणी महोदयेभ्यः श्री दिव्यरंजन महोदयेभ्यः सुश्री राधा शर्मा महोदयाभ्यः इति एतेभ्यः सर्वेभ्यः हार्दं धन्यवादं विज्ञापयामि। समग्र प्रशिक्षणं येषां नेतृत्वे सम्पाद्यते तादृश प्रशिक्षण प्रमुखेभ्यः सुधीष्ट कुमार मिश्र महोदयेभ्यः हार्दं धन्यवादं वितनोमि। सत्र संचालने सहकृतवद्भ्यः इति पूजा वाजपेयी, डॉक्टर स्तुति गोस्वामी, ओम दत्त द्विवेदी, विष्णु कुमार पाठकेभ्यः इति एतेभ्यः हार्दं धन्यवादं विज्ञापयामि। कार्यक्रमे मंगलाचरणं चहक, संस्थान गीतिका सुभाष पांडेयः, स्वागत गीतं सद्गुणा महोदयाः, एकल गीतम अजंता प्रसाद भगनी, अनुभव कथनम अरुण तिवारी, संस्कृत गीतम पूनम पाल, अनुभव कथनम लीला अंबार खाने, योगासन प्रस्तुति नित्या शाह, संस्कृत गीतम विपिन पांडेयः इति एतेषु प्रतिभा प्रदर्शनं ये कृतवन्तः तेभ्यः शिक्षार्थिभ्यः अन्येभ्यः उपस्थितेभ्यः पौनः पुण्येन पुनरेकवारं सर्वेभ्यः सादरं धन्यवादाः। जयतु संस्कृतं, वदतु भारतं। धन्यवादाः। धन्यवादः भवत्याः कृते अपि। सत्रमिदं भवतां सहभागितानां समागतानां समुपस्थित्याः प्रतिभागिनां सहभागितयः ज्येष्ठानां मार्गदर्शनेन प्रशिक्षक बान्धवानां सहयोगेन च सम्पन्ना। तावदहं शान्तिमन्त्राय आर्यन् महोदयं निवेदयामि यत् शान्तिमन्त्रं प्रस्तौति। आर्यन्। नगरे नगरे ग्रामे ग्रामे विलसतु संस्कृतवाणी, सदने सदने जन जन वदने जयतु चिरं कल्याणी, जयतु चिरं कल्याणी। सत्यशील सौंदर्य समीरा ज्ञान जलागति सारा, छल छल कल कल प्रवहतु दिशि दिशि पावन संस्कृत धारा, पावन संस्कृत धारा। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। नमो नमः। शुभ संध्या। धन्यवादः। नमस्कारः सर्वेभ्यः।
नमो नमो नमः। पठिष्यन्ति। अस्तु, धन्यवादः। नमो नमः।